स्टडीज स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर 8 है वाटर सोर्सेज एंड देयर पॉल्यूशन. Like evaporation and condensation. You must have seen puddles disappearing in a day or so. They dry up to form water vapor because of the heat from the sun. This process is called evaporation. You must also have seen water droplets on the outside of a cold glass water. The process of water vapor turning back into water is known as condensation. Let's understand how this works. Water cycle, the water in lakes, rivers and oceans gets heated by the sun. Means heat गर्मी sun की heat से वो क्या होता है, गर्म होता है. It changes into water vapor and mixes with the air. The air rises high up in the sky and comes in contact with cold air due to decrease in the temperature. The water vapor cools down into tiny drops of water. These tiny drops of water cling together to form clouds. When the clouds become heavy, the water falls down as rain. The rain water again goes to lakes. वो जो रेन आता है वो वापस कहाँ जाता है? Again rain water again goes to lakes, rivers and oceans. This water is again heated. वापस वो पानी गर्म होता है sun to make water vapor. This make a cycle known as water cycle. The water cycle is a never-ending process. Water conservation. Most of the rain in India is brought by the monsoon rain. During monsoon, there is usually plenty of water for everyone. Since rain does not fall regularly through the year, it is important for us conserve water. We conserve water building reservoirs, dams and tanks. We store water in them till we need it. Large river canals are built to take water to places where there is not enough water. A canal is a channel of water taken from river or a lake and used by farmers for irrigating. Means farmers irrigating के लिए their fields. Reservoirs are natural or artificial lakes in which water is stored. वहाँ water store करते हैं. People use this water for irrigation or to supply for domestic uses or to generate hydrochloric power. A dam is a barrier or wall built across the river to hold back the water. Forming a reservoir, it has special gates which can open the close. To control the flow of water, means उसको flow जो होता है उसको control कर सकते हैं. Some dams are built to produce electricity. Some dams क्या करता है? Produce electricity, store water and provide water for irrigating fields. Such dams which have many uses, देखो क्या uses are known as multi-purpose project. The Bhakra Nangal Dam on the river Satluj is the biggest dam in India. वो सबसे बड़ा डैम है. कौन सा? भाखरा नांगल. Water purification, water from the rivers and reservoirs is not fit for drinking. अगर उसको प्यूरिफिकेशन नहीं करेंगे तो वो पीने के लायक नहीं होता. सो बिफोर दिस वाटर कैन बी सप्लाई टू होम्स. उसके बाद ही मीन्स उसके बाद ही उसको क्या करते हैं? होम में सप्लाई करते हैं. इट मस्ट बी प्यूरिफाइड टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ एंड जर्म्स. जो जम्स और उसको क्या करते हैं? इम्प्यूरिफाइड करते हैं और जम्स उसमें क्या हो जाते हैं? मर जाते. दिस इज़ डन इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स. आफ्टर इट इज़ फिल्टर केमिकल्स आर एडेड टू मेक द वाटर प्योर. दिस मेक्स वाटर फ्रॉम, फिर वो पानी क्या होता है? प्योर हो जाता है. दिस मेक्स वाटर फ्री फ्रॉम बोथ डस्ट एंड जम्स. द प्यूरिफाइड वाटर इज़ देन सप्लाई टू हाउसेज. फिर उसको सप्लाई करते हैं हाउसों में. After purification, water is collected in big tanks. From these tanks, enriches our homes through big pipe. Big pipe द्वारा वो हमारे घर पे पहुँचाते हैं. When we open our taps, हम जब अपने नल खोलते हैं ना, it this water then we तब हमारे घर पे वो पानी आता है. In villages, people dig wells and use tube wells to get underground water. Some use rain water. कई लोग रेन का भी पानी यूज़ करते हैं. Which collect in ponds or tanks. It stream in near the village. They may get the water from it. अभी cleaning water. Sometimes in the rainy season, temp water become unfit to drink. पीने के लिए क्या होता है? अनफिट होता है.
इफ़ वी फाइंड द वाटर डर्टी वी शुड फर्स्ट क्लीन इट, पहले उनको क्या करना है, फर्स्ट क्लीन करना है. वी कैन डू इट बाय बॉइलिंग द वाटर, पहले उसको बॉईल करना है. बॉइलिंग किल द जम्स इन इट, बॉईल करने, वाटर बॉईल करने से उसमें जो जम्स होते हैं वो क्या होता है, मर जाते हैं. वी कैन ऑल्सो क्लीन वाटर बाय यूजिंग अ वाटर फिल्टर, उसके लिए हम वाटर फिल्टर भी यूज़ कर सकते हैं. इट सम हाउसेस वी गेट प्यूरिफाइड वाटर व्हेन टेप्स आर कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिकल वाटर प्यूरिफायर. हमारे सबके घर पे इलेक्ट्रिक वाटर प्यूरिफायर होते हैं ना, आरओ वगैरह सब बोलते हैं ना, आरओ है, एक्वागार्ड है. जो इलेक्ट्रिकल वाटर है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल वाटर है. Water is scarce, so many people in India perform ceremonies to show their respect for water. It is especially common in places where water is scarce. They understand its importance and life-giving properties. If the local water on the earth were to fit into 500 millibeaker, then the fresh water available was only 1 teaspoon. The rest in seawater or is locked up in icebergs. Less than 1% is finally available are fresh water. This is available underground water, ponds, and river water. Now you can understand how precious fresh water is. We can drink sea water because it is too salty. हम वो पानी नहीं पी सकते सी का, क्योंकि वो क्या होता है, सॉल्टी होता है. It can be desalinized for use as drinking water through a very expensive procedure. However, it can be used to make salt. During the monsoon, seawater comes inlands and fills up salt pans. It is kept in check by the making dikes to prevent it from flowing back. Under the hot sun, the water evaporates, leaving behind a crusty layer of salt. This layer of salt is kept and clean for use. ये आपको चैप्टर रीड करना है, ठीक है. थैंक यू.